Hello students, welcome to the channel My Private Tutor India, the India's best platform to change your dreams into reality. So in this video we will learn about the chapter Matter in Our Surroundings. We will see the change in states of matter. As we have discussed earlier that there are three states of matter, the solid state, the liquid state and the gaseous state. In this video we will learn about the change of these states. So students, when a solid is heated, it changes into liquid. When a liquid is heated, it changes into gas. When a gas is cooled, it changes into liquid. And when a liquid is cooled, it again changes into solid. So what happens inside the matter during this change of state? What happens to the particles of the matter? How does this change of the state take place? So we need to answer these questions. We'll do it one by one. So see what happens. As soon as we increase the temperature of the solid, the kinetic energy of the particles increases. Now due to this increase in kinetic energy, the particles they start vibrating with greater speed. The energy which is supplied by heat, it overcomes the forces of attraction between the particles, and the particle they leave their fixed position and start to move freely. So a stage is reached when the solid melts and it is converted into liquid, and the temperature at which solid melts and become liquid at atmospheric pressure is called melting point. तो सी स्टूडेंट्स होता क्या है, जैसे ही सॉलिड जो है उसको हम लोग हीट करते हैं तो उसके अंदर जो पार्टिकल्स है उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी होती है, उनमें मोशन स्टार्ट होता है. दे गेन थर्मल एनर्जी एंड दे स्टार्ट मोशन. मोशन स्टार्ट करते ही दे लीव देयर फिक्स्ड पोजीशन एंड दे स्टार्ट मूविंग फ्रीली एंड अ स्टेज इज रीच्ड. जब उसका मेल्टिंग पॉइंट आता है उस स्टेज पे क्या होता है, द सॉलिड इट चेंजेस इनटू लिक्विड. ओके, so this is the melting, this was about the solid changing into liquid. So the melting point of a solid is an indication of the strength of force of attraction between the particles. Obviously as solid is changing into liquid, so melting point हम लोग कह सकते हैं कि it is the measure of the strength, कि solid में force of attraction कितना ज़्यादा है ये उसको measure करने के काम में आता है. Now see, the melting point of ice is 273.16 Kelvin, and the process of melting, that is the change of solid state into liquid state, is also known as fusion. So melting is also known as fusion. Okay, now see here in the diagram you can see that first of all in a container there are ice यानी कि solid state. The particles are close together and they cannot move about. Okay, so when we provide heat to the ice, the particles they start moving faster and they start falling apart. So a stage is reached at reaching the melting point, that they convert into liquid state. The particles at this stage are very far and they move very quickly and randomly in different directions. So this was the process. You saw how solid state is changing into liquid state, liquid into gaseous state, और ये सारा process जो है ये reversible होता है. फिर जैसे ही gaseous state को हम लोग cool करेंगे, उसकी cooling करवाएंगे तो it will again change into liquid state, और liquid state की जब cooling कराएंगे तो it will again change into the solid state. Okay, so this was about the change of states of matter. Now see, melting or fusion, when a solid is heated the particles they begin to vibrate, as I have explained earlier also, with greater speed. They begin to move freely. Then a particular temperature the solid melts and changes into liquid. The process of melting is also known as fusion. So it's very clear, and it is a very expected question. You are always asked about what is melting and what is the melting temperature of ice. You are asked about these questions. This is simply the the subjective question, direct question. So next is you can see latent heat. Now what is latent heat? होता क्या है कि जैसे ही the heat is used up for changing the state by overcoming the forces of attraction between the particle. But as this heat energy is absorbed by ice without showing the rise in temperature, it is considered that it gets hidden into the constituents of the beaker, and this is known as latent heat. तो जब भी हम सॉलिड स्टेट यानी जैसे आइस था, आइस को हीट कर रहे हैं तो इसमें क्या हो रहा है, वो हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है.
एब्जॉर्ब कर रहा है और ये हीट एनर्जी उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल में जाके हिडन रहता है, छुपा रहता है, जब तक कि वो अपना स्टेट चेंज ना कर ले। और इस हिडन हीट को हम लोग बोलते हैं लेटेंट हीट। ओके, so there are two latent heat. First is the latent heat of fusion and second is latent heat of vaporization. We will see one by one what is the definition of latent heat of fusion. It is the amount of heat energy which is required to change 1 kg of solid into liquid at atmospheric pressure. At its melting point is called latent heat of fusion. So students, this also makes a direct question. You can be asked about what is latent heat of fusion, or else you can be asked about what is latent heat of vaporization. Now see, what is boiling? When a liquid is heated, its particles they begin to move even faster. Then at a particular temperature, the liquid begins to boil and changes into vapor. जैसा कि सॉलिड स्टेट में हुआ था, इन द सेम वे अगर हम किसी से सपोज गैस पे एक बीकर रखते हैं, उसमें पानी भर के रखते हैं, तो उसमें क्या होता है, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ने लगता है, द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड दे स्टार्ट एब्जॉर्बिंग हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे और वो उसमें लेटेंट हीट की तरह हिडन रहेगा। फिर क्या होगा, एक स्टेज आता है पर्टिकुलर टेम्परेचर जिस पे लिक्विड जो है वो बॉयल होने लगता है और धीरे धीरे वेपर में कन्वर्ट होने लगता है। ओके, सो इट इज अ बल्क फिनोमेना. व्हेन अ लिक्विड बॉइल्स द बल्क ऑफ द लिक्विड चेंजेस इनटू वेपर and the temperature at which the liquid starts boiling is called its boiling point. The boiling point of water is 100 degree C or 373 Kelvin. Okay, so this is very easy. बॉइलिंग क्या होता है, जब लिक्विड को हीट करते हैं तो उसके पार्टिकल्स जो हैं वो भी हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं. लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन आएगा यहाँ पे, बिकॉज हेयर द लिक्विड इज चेंजिंग इनटू वेपर, तो इसीलिए लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन. वहाँ पे क्या हो रहा था, सॉलिड वाज चेंजिंग इनटू वाटर और सॉलिड वाज चेंजिंग इनटू लिक्विड स्टेट, तो इसीलिए लिक्विड स्टेट में चेंज हो रहा था, तो हम उसको बोल रहे थे मेल्टिंग हो रही थी ना, तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. Now see, again let's see the definition of latent heat of vaporization. The amount of heat energy which is required to change 1 kg of liquid into gas at atmospheric pressure at its boiling point is called latent heat of vaporization. So it's very clear, जो amount of heat required होता है 1 kg of liquid को convert करने के लिए at its boiling point and atmospheric pressure into vapor is called latent heat of vaporization. Okay, so you can see in this diagram you can see the effect of temperature on molecular motion. You can see that solid when it is cold, for example in case of ice, तो इनमें कोई motion नहीं हो रहा है, but as soon as we provide temperature to the solid, the particles they start moving freely. Okay, in the same way liquid when it is cold, it is not having any kind of motion and the particles they are close to each other somewhat, but once we provide the temperature, the particles they start moving and you can see the increased spaces between them. ऐसा क्यों होता है, because liquid is converting into gaseous state and we know that the intermolecular spaces in gaseous state is maximum. Okay, so the last topic for this video is sublimation. Sublimation क्या होता है, अभी तक हमने क्या देखा कि solid जब हीट करते हैं तो इट चेंजेस इनटू लिक्विड, लिक्विड को जब हीट करते हैं इट चेंजेस इनटू गैसियस स्टेट, सॉलिड को जब गैसियस स्टेट को जब कूल करते हैं इट चेंजेस इनटू लिक्विड, और लिक्विड को जब कूल करते हैं तो इट चेंजेस इनटू सॉलिड. बट देयर इज अ फिनोमेना इन विच देयर इज चेंज ऑफ स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैसियस स्टेट और गैस टू सॉलिड स्टेट, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज सब्लिमेशन. ओके, इसका बेस्ट एग्जाम्पल है कैम्फर और अमोनियम क्लोराइड. कैम्फर यानी कि कपूर, वो सॉलिड स्टेट में होता है. ओके, तो वी कैन सी दैट जैसे ही कैम्फर को हम लोग बर्न करते हैं तो जैसे हीट प्रोवाइड करते हैं तो सॉलिड स्टेट डायरेक्टली चेंजेस इनटू वेपर, उसे खुशबू आने लगती है ना, क्योंकि वो डायरेक्टली चेंजेस इनटू गैसियस स्टेट. ओके, सो दिस प्रोसेस इज नोन एज सब्लिमेशन बिकॉज in this process the solid is directly changing into gas and the gas will directly change to solid, vice versa. Okay,
So here you can perform one activity. Actually it is a lab activity, but let me explain you, because कभी कभी जो है एग्जाम्स में they ask about this activity and you have to write this activity like sublimation के केस में. Okay, so what we do, we take some camphor or ammonium chloride, crush it and put it in china dish and put an inverted funnel over the china dish. We put a cotton plug on the stem of the funnel. As you can see here in the diagram, cotton plug लगाया है हमने on the top of the funnel. Okay, so see this is the arrangement. cotton को put किया है, inverted funnel है, ammonium chloride है. Okay, ammonium chloride china dish में है और नीचे जो है burner है. तो as soon as we start the burner and start heating it slowly and observe, तो हम क्या observe करते हैं कि the ammonium chloride which is there in the ammonium chloride vapor which is there, as soon as we start heating it start changing into ammonium chloride vapor. तो अमोनियम क्लोराइड जो सॉलिड था वो डायरेक्टली अमोनियम क्लोराइड वेपर में चेंज होने लगता है, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज सब्लिमेशन. द सेम थिंग यू कैन रिपीट फॉर कैम्फर ऑल्सो. यहाँ पे अमोनियम क्लोराइड की जगह पे हम अगर कैम्फर रखें, उसको भी हीट करेंगे तो इट विल डायरेक्टली स्टार्ट चेंजिंग इनटू गैस. वहाँ पे लिक्विड स्टेज आएगी ही नहीं. तो लेट्स रिमेंबर दैट द चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट डायरेक्टली टू गैसियस स्टेट इज नोन एज सब्लिमेशन, एंड दिस प्रोसेस is a unique process. So you can expect a question from this topic, that what is sublimation, or perform an activity to show that how camphor is changed into directly to gaseous state. Okay, so in this video we have learned about the changes of state, कि changes of state होते कैसे हैं, why do the change of state occurs, how the particles they start motion, कैसे हम जब उसको हीट प्रोवाइड करते हैं तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन पे फर्क पड़ता है, कैसे पार्टिकल्स जो है वो अपना मोशन करते हैं और एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज करते हैं, एंड दिस प्रोसेस इज रिवर्सिबल. ओके, सो दिस ऑल वी हैव सीन इन दिस वीडियो. द नेक्स्ट इफेक्ट ऑफ प्रेशर एंड दैट वी विल सी in the next video. Till then, keep reading and keep revising this chapter and start making your own notes, start doing the question answers. This is a very easy topic and very easily prepared for exam. Okay, so you can easily prepare this topic for exam. Till then, thank you.